Good evening, everyone, and welcome to the Kautilya School of Public Policy's Let's Talk Policy series. We are thrilled to have with us this evening Pradeep Gupta, one of India's best known psephologists from Access My India, who, of course, has made headlines over the last few years because Access has been one of the rare pollsters who's got more elections right than it has got wrong, though there have been some elections they have called wrongly, and we'll ask Pradeep Gupta ji about that. But it's a great profession to be in because India loves its politics. India loves to have elections. We have them almost every year. There's never a dull moment as far as elections are concerned. And voters do often end up surprising even the best of psephologists, as Pradeep ji is probably going to share with us over the next hour or so. He's just out with this book, his new book, How India Votes, and it's a fascinating look at various dimensions of how people actually cast their vote in this country, whether it's women voters, whether people vote on religious lines, whether development is a bigger issue, etc. So we have a lot to talk about with Pradeep Gupta tonight. Thank you very much, Pradeep ji, for joining us. My pleasure. Thank you for having me here. So Pradeep ji, firstly, let me ask you about exit polls overall to begin with, because at this point, especially after the recent assembly elections, exit polls have a pretty bad reputation at the moment. So a lot of people just want to know, why should we believe in them when they very often do miss the mark and the gap is so wide ranging? Let's say you have 10 exit polls. In the Lok Sabha election, I remember in 2014, ek ka tha, the gap ranged from say 200 seats to 360 seats. Up, somebody will be right then. No. So why should we still keep the faith in an exit poll then? Nidhi, let me tell you, first of all, it is important to understand how it is being done and what is there in exit poll for that matter. See, people voted is fine, but the moot question is how people have voted and why they have voted for a particular party or a particular leader. Generally, we try and get this insight from the exit poll. Now, coming to the track record of exit poll in the recent past, I would say not even Access My India, my company, but overall, I would say it is pretty good in comparison to 5 years back. You know, when we talk ourselves, we have called so far 52 elections since 2013, and we got 48 correct out of that, and not only correct, with I would say more than 90% accuracy. So yes, we have failed 4 cases to be precise, and there are reasons to believe it. And when we say exit poll, generally it is the total electors in a particular state. Let's talk about West Bengal. There are about 7.32 crore total electors, and out of that, about 6 crore voted. 6 crore voted, and our sample size for any polling agency for that matter is generally few thousands. And we try and make some sense out of it through our different process, methodology, and scientific approach, and get closer to the result. And I mean, I say I'm very proud of my team. And after 2018, where we got Karnataka election wrong. When I say wrong, though we predicted hung assembly, but we predicted Congress will be number one party and BJP second, but it was other way around. So I say it is wrong on our part. After that, 14 consecutive elections, we got 100% right, I would say 100% right, believe me. Be it Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan in 2018, then general election. And in general election also, except Odisha, we got all the state prediction bang on. And that is the probably reason why we got overall tally of 352 seats for NDA correctly. And that is the reason why it is the matter of case study in Harvard Business School. So, I mean, it all depends what you want, and the way we have been predicting and coming accurate, people's expectations has raised. In Tamil Nadu recent election, where we predicted the lower range of Tamil Nadu for DMK 175, and they could end up with 160 seats. People started saying, oh, Pradeep, your poll is wrong in Tamil Nadu.
and AIDMK Gadbandhan got about 75 odd seats, 75 odd seats and 160 seats. We predicted 175 for the DMK and about 60 odd for the AIDMK, but they said, Pradeep, your poll is wrong. Now you decide. I can't help it. No, you're absolutely right. I mean, the reason why, Axis has stood out and made headlines all these years is because you've often stuck your neck out and called an election in a way like Delhi, you did very famously for the AAP in the last election, which nobody else did. But there have been spectacular misfires, very few, but they have been there. So let me ask you what everybody wants to know. Bengal mein kya hua? Why didn't you get Bengal? Because it was not just a victory for Mamta Banerjee; it was a landslide win. Yes. How did you miss that in your poll? What do you think happened? Let me tell you. First of all, let me thank to all my supporters and viewers, and also my family and friends for believing in an Axis. And what happened in Bengal is, we know over the years, more than 50, 60 years, Bengal is known for violence, political violence, but it was limited to the violence between two political parties and their karkarta and worker. What had happened this time, right from CM Mamta Banerjee to union ministers to BJP party president, and most importantly, the common man, the voter, 4 voters got killed in the CRPF firing. This fear factor was so much. In fact, I visited Bengal myself, conducted about 200 interviews, but the kind of fear factor was there in people's mind. They were not ready to speak out anything whatsoever. And in fact, in my exit poll reports, I have mentioned that, with a caveat saying that there are about 20% silent voter. And हमारे एक जो कैपी टैबलेट्स होती है, उसके अंदर एक काउंटर लगा होता है कि कितने लोगों ने आपसे बात करने के लिए टोटली रिफ्यूज किया. तो यदि लोग बात करने के लिए ही मना कर दे, तो दैट इज वेयर आवर स्टोरी एंड्स. And these 20% voter, silent voter, we divided into both the major party, which is BJP and TMC, 10%. And the result turnout is in favor of BJP. So what was our vote share percentage in terms of 43 for BJP and 44 for TMC? What is the result? 48.5 for TMC, meaning 5% more than we predicted. And for BJP, 38%, 5% less than we predicted for the BJP. It means 75% of silent voters seems turn out in favor of TMC, which we could not gauge. So there I would say this is purely my mistake. And I do agree. And in fact, our team, particularly ground team, has relentlessly worked very hard in Bengal. And in fact, every day some of the other surveyors were getting ill. And in fact, one of our team leader, Aditya, got admitted in hospital for more than 20 days. And the corona score was 23 out of 45. You can imagine. I was going to ask you about this, that I'm sure that COVID would have restrained your team from doing their work also. Definitely. Every day, somebody's, I mean, in one of the members, father-in-law got, death. Then he himself got so many things. And every day there was a problem, but we don't want to come and give the excuses, So but I think what you're saying is important, because you've laid out two things. One is the fear factor, as you say, people not as responsive to pollsters in a very bitterly contested election, which saw so much violence on all sides, as well as the fact that COVID, hampered your team. If Arnav is here, some of our students also have questions, and other participants. If Arnav is here, if we can get Arnav and Revati both on the panel. But meanwhile, while they come on, let me also ask you, in general, when you do conduct an exit poll, in let's say normal times when you don't have COVID, etc., how honest are voters actually with pollsters about how they have voted? Does it differ from state to state and circumstances? How does it work? Yes, so it is ranging between the silent voter, or those who are reluctant or not ready to speak out, is generally between 2 to 5% rate. It depends on state to state, So it is generally 2 to 5%. So if you equally divide into major two parties, generally the maximum range is 2.5% gap, that can, that's the maximum. So that is the reason why generally we give the range and 2% error margin.
So this is the case. But in case of Bengal, and particularly when common men got attacked and CM, then who can be spared? So that was the case. So yeah, generally in exit poll, there are system and methods and processes. We are able to get the insight whom they, though it is a confidential matter. Generally, their first attempt they say, "Boss, ये तो confidential, why should I tell you?" So we never go and ask who you have voted for. We go simply ask what are the problems you are facing in the area, who you think is the right candidate or the right party who can address this. So these are the different types of question. Who should be the next chief minister? Through series of these kind of question, we get some sense out of it. Okay, so Revati, would you like to go ahead with your question, please? You can unmute your mic. Yeah, thank you. Sir, I wanted to ask you, I mean, maybe you have faced these questions earlier as well, but I'm just curious. So how would you react to the fact that, Election Commission decided to spread the West Bengal elections through 8 different phases? I mean, this particular thing received many criticisms across the nation and especially from West Bengal. So, I mean, what is your opinion on this? See, we have to see the practicality when it comes to practicality, and because of fear factors in the past as well in Bengal, or even that matter in Uttar Pradesh or Bihar. Generally, these are the 3 big states where generally elections, any election, be it general election or assembly election, is stretched out to more than 5 phases for sure. And reason being, and because of Corona this time, number of polling stations were increased more than 50%. जनरली एक पोलिंग बूथ के अंदर 1500 वोटर्स होते हैं. दिस टाइम दे डिसाइडेड टू डू 1000 वोटर्स. It means, what does it mean? The moment the polling number of polling booths increases, you need more security personnel to be placed, and there are limitation of security forces also. So they keeps on moving as the election progresses phase by phase, from one place to another place. So yes, it was stretched out, but unfortunately, this pandemic, I mean, the peak happened after 10th April or so, which is the 4th phase. So I mean, criticism is fine. That is the political thing, but the practical reason, it's not that the first time Bengal had 5 or 6 phase election. In general election also, it was stretched out as a 7 phase. So this time one more phase, maybe because of sheer number of polling booths increased. Right, Arnav, please go ahead with your Okay, question. okay. Good evening, sir. This is Arnav from Hindu College. Yeah. Sir, in the recent elections, we have witnessed a trend where some parties who are relatively more polarized than the previous ones contest with a base percentage of not 100, but a base percentage of 70, where they're taken already in their mind that a particular 30% minority, for instance, will never vote for them. Sir, in Okay. such a scenario, how does the dynamics of psephology and polling strategizing change on the ground? And sir, a second question is, so in the recent election, we heard about majority of the minority and minority of the majority, quote unquote. Sir, is this just a political parlance, or does it hold some significance when we come to actual psephology? So Arnab, let me try to answer your question. When it comes to psephology, it's all about voters and reading out voters' mind, understanding their behavior, how they make their choices. Let's keep for some time the political parties leaders aside. You need to understand how a voter make their choices, how they make their choices, whom to vote or whom not to. So there are 3 basic key elements in any election. All the elections evolve and revolve around these 3 key elements. One is the people who elect the leaders, a party, a government. The second is leaders whom people are going to be elected. And then the third thing is the performance of incumbent government whom they have voted 5 years back. So these are the 3 things. When I say people, they have their own problems, issues, expectations, aspirations from government they are likely to vote. And let me tell you how democracy or election function in India. There are 100 vote
caste. I'm saying the people who have turned out. I'm not talking about the electors. For example, in 19 election, general election, 19 election, there are 67% people who cast their vote. So I am not talking about 33%. Please understand. This is very important to understand who these are 67% and who this is the chunk of 33% who didn't vote. So this 67%, let's count this as 100%. 80% of this 67% vote belongs to rural and poor. Their livelihood is depend on the government. Please, I'm underlining this part. Forget the polarization, communalism, what leaders are saying, what political party is saying. Keep all this aside. Believe me and trust me. Their livelihood is purely depend on government, their social security measures, and so on. So they very carefully elect and select any government for that matter, you know. So this is how it is. And of course, when you say polarization, there are two things. One is the religion and second is the caste. As per our study, yes, people definitely vote based on the caste and definitely not based on the religion. Please understand. And why is that so? So who is leader? Who is leader? Leader is a public representative. Unless this leader or political party understand their culture, language, issues, problems, what are you representing for? So when people elect their leader, definitely if I belong to a particular community, why not? Why should not I, elect my leader who understand me, who understand my culture, who understand my language? So this is how they make their choices. But Pradeepji, if I could interrupt here to ask, just to follow up on that, I don't understand this bit about there not a religion or religious polarization not being a factor for a couple of reasons. One is we do see religious polarization repeatedly used as an election card by political leaders. The BJP in particular uses it right from the top leadership to the party president to the home minister, everybody. Yogi Adityanath is a star campaigner, and we see the kind of dog whistle politics that plays out. If people are only voting on the governance record of a government, why don't they stick to those issues in their speeches? Why do they talk about Shamshan Kabristan? Why do they talk about, Pakistan mein patake phodenge? Why do they talk about that? And the fact is that, obviously religion is a factor, which is why no Muslim was given a ticket in the Lok Sabha election by the BJP. There is, no Muslim MP from that party. And so there is clearly a religious polarization that also happens. This is just my observation as a reporter. Didi, you are 100% right. But here we are talking about how voters make their choices. Now, the second part of this is why these people, as you mentioned, they do what they are doing. So there are two answers to this, why they are doing. Though this is my job, probably why they. Now you have to come and tell me, when all these things, whatever you just now narrated, tell me one single election you think convincingly is won based on this. I don't think you will find a single one. I'm not 100%. The last UP election? Not at all. UP election was purely swing in the favor of BJP. The large, though any election defeat or win is, there are so many reasons to it. The biggest one was Notebandi. In 8 November 2016, Notebandi was announced and election was started. The first phase started in February first week, and election was announced in the first week of January. So, and we have been doing, as I told you, the tracking all the time throughout the election year. And Samajwadi Party was having a very good chance. I'm not saying they were winning, but they were having a very good chance. The moment their interfighting started between son and father, and उसके बाद वो सब अलग हो गए, then केस में कोर्ट चला गया उनका साइकिल सिंबल के लिए, and symbol is allotted to अखिलेश यादव. तब तक सब कुछ ठीक था. तब तक अखिलेश was, I would say, Samajwadi was number one party.
बिकॉज ऑफ दैट सिंपैथी दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और अखिलेश को सिंबल मिल गया, तब तक ठीक था। बट सिंबल मिलने के बाद द मोमेंट ही स्टार्टेड अगेन रिज्वाइनिंग द फादर एंड जो उनको सगे संबंधी थे उनको टिकट देना, एंड दैट इज वेयर दे कंप्लीटली लॉस्ट। सो यूपी वाज नेवर अ बिकॉज ऑफ दिस। आप उसके हिसाब से इसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए 1991 जबकि आपकी बाबरी मस्जिद डेमोलिश की, राइट, तब से लेके आज तक 2000 जितने भी 3 इलेक्शंस हुए, पहले तो 91 के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई, 5 साल नरसिम्हा राव जी ने रूल किया। 96, 98, 99 3 इलेक्शन वी हैड इन द स्पैन ऑफ 4 इयर्स। तीनों के तीनों में बीजेपी का बेस्ट स्ट्राइक रेट वाज 182। मगर फिर वो पोलराइजेशन की बात क्यों करते हैं बार बार? मैं वही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फॉर्मूला दैट डजंट वर्क एज यू से। मैं उस पे आ रहा हूँ। फिर व्हाई ब्रिंग अप दी, अब देखिए योगी आदित्यनाथ का व्हाट इज हिज एसेट एज अ स्टार कैंपेनर फॉर द बीजेपी? इट इज टू गो आउट देयर एंड पोलराइज ऑन रिलीजियस लाइंस। वो तो ऑब्वियस है, उनकी स्पीचेस से ऑब्वियस है, हर स्पीच में वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। सो फिर क्यों करते हैं अगर ये काम नहीं करता है? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, वो करते हैं। आई मीन यू एंड मी हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि वो कुछ भी करते रहे, चाहे आपने जैसे अभी बताया कि पाकिस्तान में फटाके पूछेंगे 2015 की बात, साहब वो 3/4 मेजोरिटी से लालू नीतीश गठबंधन जीता, आपको पता है? यस, आपको शाहीन बाग पता है? अभी हाँ। 2020 असेंबली इलेक्शन ऑफ दिल्ली कितनी सीटें आई? 8 सीटें वर्सेस 62 सीटें। आप उसको दूसरे मायने में भी ले लीजिए कि 2014 जो जनरल इलेक्शन मोदी ने जीता, आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए उसके दौरान कहीं पर पे इस तरह की बात हुई? बिल्कुल नहीं हुई। आप 19 का इलेक्शन बता दीजिए, कहीं पर इस तरह की बात हुई जो अभी हमने डिस्कस की, शाहीन बाग हो या उस समय की? कभी नहीं हुई। लेकिन इट्स नॉट जस्ट बीजेपी, अगर आप कांग्रेस देखें, राहुल गांधी अब मंदिर जा रहे हैं, ही इज गोइंग डूइंग टेम्पल हॉपिंग। आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बात करें तो दे आर टुडे कंसिडर्ड लाइक अ बीजेपी लाइट। मतलब वो भी, अरविंद केजरीवाल भी मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन करवा रहे हैं पब्लिक में। तो एट द एंड ऑफ द डे ये बाकी पार्टीज भी दे आर रिजॉर्टिंग टू दिस सॉर्ट ऑफ ब्रांड ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। व्हाई? वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ये समझ लीजिए, दुनिया में जो भी ये पेन है ना, ये पेन मैं खरीदता हूँ, भले ये 2 रुपए का हो या 2000 का हो या 20,000 का हो, है वो पेन। बैंक का पेन है। पेन यदि ये लिखना बंद कर देना आप और मैं, इसको तुरंत डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो व्हाट डू वी मेंट फॉर? लीडर जो बना है वो डिलीवरी जिस दिन बंद कर दे। अब आपने इतनी सारी बातें बताई, अब मुझे आप बता दीजिए एक इंसिडेंट की नवीन पटनायक व्हाई ही इज विनिंग इलेक्शन 5 कंसेक्यूटिव टर्म, एंड पुरानी विक्ट्री से आगे की विक्ट्री उससे भी बड़ी होती है। कहीं विजिबिलिटी है, कहीं पोलराइजेशन है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे स्टेट का सबसे पुअर स्टेट आपने है उनके बारे में कंट्री के लिखा है अंदर। अलग से। हाँ, हाँ, सबसे पुअर स्टेट है कंट्री के अंदर, व्हाई इज विनिंग? तो लीडर जो करते हैं वो करते हैं। अभी आई मीन यू एंड मी हैव नो कंट्रोल ऑन देम। सबकी अपनी अपनी एक यूएसपी होती है, आई वुड से अपना एक तरीका होता है, बट वो इसलिए करते हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। हम और आप क्या होता है कि देखिए, एक लीडर को ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्प्रेस करना है, अट्रैक्ट करना है, विच इज द फैक्ट। और जो आपने जिन भी लीडर्स की बात करी, उसमें मुझे ये लगता है कि 10% फिर भी लोग ऐसे होते हैं जो शायद इन मुद्दों से इन्फ्लुएंस होते हैं। 10% होते हैं, आई एग्री दैट, बट 90% नहीं होते, और ना ही किसी भी इलेक्शन के जीत हार में इसका कोई वजह होती है। बट बड़ी चीजें उनको पैकेजिंग करनी होती, उनको मार्केटिंग करनी होती है। आप उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ले लीजिए, कोई भी ब्रांड होता है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, एक इमोशनल लाइन के ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट दिखता है, बट सब्सटेंस और प्रोडक्ट तो कुछ और ही होता है। वो थोड़ी ना अमिताभ बच्चन या सलमान खान होता है उसके अंदर। तो एक इमोशनल लाइन के ऊपर उसको करना है, और मीडिया के साथ इसका बड़ा श्रेय मीडिया को भी है। यदि मीडिया इनके कही हुई बातों को एम्पलीफाई ना करे, ब्रॉडकास्ट ही ना करे, तो कहना ही बंद कर देंगे। अब जब अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और कोई 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 बात करे ऐसी, कोई एमपी बात करे ऐसी, तो मीडिया कांट आल्सो इग्नोर इट। सूरज, अरविंद हैज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्रदीप जी। इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एक्चुअली अबाउट पोलराइजेशन। सूरज, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। Yes, ma'am. Good evening, sir. We are about 74 years old after independence. Earlier, there were only two kinds of parties, Congress and non-Congress party. But for the past 20-25 years, regional parties are dominating the politics at national level.
And do you think, is it a good sign where regional parties, they demand favors for a particular region and all? Is it good for the development of a nation as a whole, when regional parties dominate national politics? See, it's not why regional parties are emerging as a, at the forefront at the cost of, at this point of time, Congress. And before, I would say 90s, it was the opposition, which is generally, Jan Sangh or Janata Party or, BJP after 1980. So it's the people again who elect, and there are party who got vanished. Again, I am telling you, and people is very simple. Whoever is going to take care of them, they are going to elect. It is as simple as that. For example, I am sure you are, I think you are a student. आप आपका जो बोलते हैं ना अन्नदाता होता है, आप यदि कहीं काम करते हैं तो आपकी कंपनी के अंदर आपका बॉस होता है, आपका सिस्टम होता है, यू आई मीन बोथ हैव टू टेक केयर ऑफ देम, तभी दुनिया चलती है। और उसी हिसाब से जो 80% में वापस कह रहा हूँ, उनकी लाइवलीहुड बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड है, तो उनको तो बड़ी केयरफुली इलेक्ट करना है, बी इट रीजनल पार्टी और एनी अदर पार्टी। और रीजनल पार्टी क्यों ना डिमांड करे, इफ आई एम सिटिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट और मैं अपने लीडर से डिमांड कर रहा हूँ, सो हैज दैट लीडर इज डिमांडिंग टू ऑन द नेशनल फोरम विच इज द पार्लियामेंट, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? सो किसी एक ने तो कोई उसका बोलते हैं ना कि शुद्ध भाषा में कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ है ना, कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो सामने खड़ा है, दोज हु इज गोइंग टू टेक माय केयर, आई एम गोइंग टू वोट फॉर देम। तो आप उसको उस लेंस से देखिए, फ्रॉम अ वोटर्स पर्सपेक्टिव। Okay, Wasim, you have a question for Pradeep ji. Go ahead. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. So my question is, in the recent elections, what is the sample size that you take for each parliamentary constituency or an assembly constituency? And do you also segregate this sample size based on their caste, religion, and their gender? My second question is, former IAS officer Kannan Gopinathan has been writing a lot regarding the EVMs, their malfunctioning. And so what is your take on this EVM versus ballot thing? Okay, Wasim, so one by one, I try to answer your question. One is your sample size. So yes, in Bengal, our sample size was total 63,000 and roughly around 200 per assembly constituency. When how we select the sampling is everything in a market research business. So yes, we definitely take care of gender for sure and caste for sure. These are the two basic key elements. We have to be very careful while selecting the sampling. Now the third question what you asked, I just forgot. About EVMs. He was asking, what do you think of these EVM conspiracy theories? Nothing at all. EVM is very good. Nothing can be done in EVM. Trust me. Otherwise, all my poll would have been gone, wrong. Yeah. Well, I can tell you there is another leading psephologist in this country, Dr. Pranoy Roy, who shares that view. Yeah. He's always said that he doesn't believe in this EVM tampering business, his own book goes into that as well. Vinod Amanchi is on the panel. Vinod, you have a question for Pradeep ji? Yes, ma'am. Go ahead. Ma'am, I've been seeing this elections in the past. I've been very closely working with the South elections. So I see BJP is trying very hard to create a footprint in southern states, but still, I don't see them flourishing here. But do you see after the post-election, is there any from the government, what would be the future of these states? Is there any support from center? What would be the future of the states, which is where the BJP's impact is not that? Okay. Interesting question, Pradeep ji. How do you see that relationship then between these sort of opposition states? Again, see, this is all about connect. So BJP, so-called bade jo leaders hai, all big leaders or tall leaders, we call it. Mostly, और बीजेपी शुरू से एक होती है कि एक कंपनी है, उसकी ब्रांड इक्विटी होती है, बट ब्रांड इक्विटी
का कोई मायने नहीं है जब तक उसको जमीन के ऊपर आउटलेट्स के थ्रू उसमें आपका प्रोडक्ट सेल ना हो। तो बीजेपी के साथ समस्या ये है कि सदर्न स्टेट्स एंड पर्टिकुलरली ईस्टर्न स्टेट लाइक उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, अर्लियर इट वाज असम आल्सो, उनके खुद के फूड सोल्जर्स या वो नहीं है। नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक इनरोड्स इनटू दैट, so it will take some time, you know, it will take some time. 1980 से वो 2 सीट से अभी तक इधर पे पहुंचे हैं, प्योरली बेस्ड ऑन दी वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया, बट उसके लिए थोड़ा समय लगा। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि सदर्न स्टेट्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सदर्न स्टेट्स आर फ्लोरिशिंग over the years and they've been given good weightage too as well. There are problems in state like Uttar Pradesh, Bihar, जिनको हम बीमारू states कहते थे, you know. So government largely focuses on this, whereas coming to the southern states, all 4-5 states are in very good shape as far as the self-sufficiency is concerned, you know, because of obvious reasons. All right. There are lots more questions coming in. Ratnadeep, you have a question for Pradeep ji. Go ahead. Yeah, I have a couple of questions. So I was reading Pranay Roy's book, Dr. Roy's book, and he mentioned this interesting fact that most of the time the pollsters get the accurate predict the winner correctly, but the strike rate of the exact seats most of the time they play safe. Is there a reason why? And the second is in the same there's another chapter in the book which I find it very fascinating, and I thought I should ask a question about that. The question is about how a woman play an important role in the election, in the understanding the election, especially the exit polls, because we have seen a lot of women have come out and voted in the last election, especially in smaller states, which in the book it mentioned a figure that it has 1.6% more than men. So how does the swing affect those voters? Because especially in seat like Bengal, it has a different way of voting, especially women voters. In fact, I wanted to ask you about that, Pradeep ji, just to take off on that, because from whatever analysis pollsters have done after the Bengal results, it's very clear that women did vote in very large numbers for Mamata Banerjee and the Trinamool Congress. And women as a vote bank have really clearly emerged over the years as very key for all political parties, haven't they? Yes, definitely, yes. And the reason being is a very simple. See, again, it's a now please understand the Indian woman per se, you know, the voter, particularly Indian woman voter, you know. So any decision making, it largely depend on your needs, your expectation and aspirations. So when it comes to women, except southern India, in all 75% of India, women is largely depend on men, right? For their whatever. So I would say because they are largely dependent, जिसकी वजह से हम बोलते थे भारत एक पुरुष प्रधान देश है, ठीक है? जनरली उनके जो डिसीजन होते हैं, बड़े डिसीजंस जो होते हैं, जो घर के आदमी ने, मर्द ने ले लिया, वो उसको सब लोग फॉलो करते हैं. Why is that so? Because वो उस घर का मुखिया है. मुखिया क्यों है? क्योंकि वो कुछ पैसे कमा रहा है, ठीक है? उम्र तो एक बात है, बट बड़ी चीज है कि पैसे कमा रहा है. इस चीज को सबने भापा, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको समझा. सो वुमेन को जो है सबसे ज्यादा आई वुड से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मार्क दिस वर्ड. जैसे ही वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आनी चालू हो गई, इस चीज को थॉट थ्रू किया था चिदम्बरम साहब ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने जो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर स्कीम लेके आए, उसके पहले 2004 जो मनमोहन सिंह सरकार थी, उसके अंदर मनरेगा आया, जो कि एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी इन रूरल इंडिया. बट बड़ी चीज ये होती थी कि वुमेन के हाथ में पैसा आता ही नहीं. जब कैश के थ्रू उसको जो पैसा देते थे, तो उनके मर्द उनसे पैसा ले लेते थे और वो अपने हिसाब से उसको खर्च करते थे. बट चिदम्बरम साहब ने वो डायरेक्ट मनी ट्रांसफर चालू किया, तो जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के चलते पैसे का ट्रांसफर है, वो वहां पर जाना चालू हुआ. उसके बाद जब मोदी जी आए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी चीज, इसको और आगे ले जाते हुए, जो आपको याद होगा, जनधन अकाउंट. चिदम्बरम साहब ने तो स्कीम शुरू कर दी, चालू भी कर दिया, बट वो इवन 50% भी नहीं थी, क्योंकि उतने लोगों के खाते ही नहीं थे, पर्टिकुलरली वुमेन.
जब ये उसके खाते भी खुल गए, देखिए इंदिरा आवास योजना पहले से चली आ रही है जिसके अंदर घर बनाने के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती थी सरकार, इंदिरा आवास योजना उस समय से चली आ रही है। बट इस गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने आके क्या किया कि मैंडेटरी कर दिया कि जो घर देंगे वो केवल फीमेल के नाम पे होगा। आप दीदी जी खुद फीमेल है, आप अपना प्लेजर और अपना वो जान सकते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जब आपके नाम पे घर हो जाए, जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, तो you suddenly become a decision maker. And once Is you what become, happened in Bengal also. The women are the definitely yes, beneficiaries of the definitely. TMC schemes. Yeah. In our poll was also, it was more than 2%, and in fact it seems, जो हमने बाद में decode करते हैं result को vis-a-vis our exit poll, so it seems about 5% women, more women has voted in favor of Mamata Banerjee for obvious reason. This was started by J. Jayalalitha. J. Jayalalitha का आप ये सोच लीजिए कि घर के अंदर का प्रेशर कुकर से लेके, गैस का चूल्हा से लेके, रेफ्रिजरेटर से लेके, साड़ी से लेके, बिंदी से लेके, सब कुछ गवर्नमेंट का दिया जाता था। तो जो तमिलनाडु के अंदर है, AIDM के जितने बार भी जीतती थी, वो सबसे बड़ा फैक्टर, वहां जाति का फैक्टर नहीं होता, वहां केवल एक फैक्टर होता है जेंडर का, और वो वहां से फिनोमेना चालू हुआ और सब पॉलिटिकल पार्टी ने उसको क्या छोड़ा। There's an interesting question from Farhan Khan, who has asked that, UP is going for elections early next year. And when you look at the recent Panchayat election results in April, which party do you think has a benefit right now in UP? What do you think the effects of, say, the COVID mismanagement or the farmer protest would potentially be in UP? So it's too early to comment because जो पेंडेमिक और उत्तर प्रदेश की पर्टिकुलर बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो अभी बढ़ते क्रम में पीक चालू हुआ है। सो लेट अस सी कि हाउ मच डैमेज इट डज द पेंडेमिक vis-a-vis the government management system उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो। Now coming to the municipal election, let me tell you, municipal elections जनरली जो होते हैं, और खासकर ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर जो थे वो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस थे, तो वो प्योरली आपका ग्राम पंचायत का एक जो दायरा होता है, आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, आपको पूरा का पूरा गांव नजर आ जाएगा। तो वो ज्यादा करके आपने देखा होगा उसमें मोर देन 33% जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आते हैं। तो आप उसको स्टेट इलेक्शन के ऊपर उसको एक बेस पॉइंट नहीं मान सकते हैं। तो इसके लिए आई वुड से कि लेट्स वेट एंड वॉच कि और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। In fact, there's a question from Shitish who's asking that was there an impact of COVID in the last few phases of the Bengal election? Have you been able to see a correlation there? Definitely yes, there was a case, and after April 10th उसके बाद ही जो है प्रेसिडेंसी बर्धमान रीजन पर्टिकुलरली एंड ऑफ कोर्स मालदा मुर्शिदाबाद में 7th और 8th फेज में फर्क था, बट जो 5th और 6th के फेज में जो फर्क था जिसमें ऐसा लग रहा था बीजेपी इज डूइंग गुड बिकॉज उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में इन दो रीजन में बहुत अच्छा किया था। मेदिनीपुर में खासकर आपके ये अधिकारी भी आ गए थे, बट बर्धमान जो था वो पूरा में था, उसमें कंप्लीट शिफ्ट जो है टीएमसी के फेवर में चला गया, जो कि बीजेपी के फेवर में लग रहा था पार्लियामेंट इलेक्शन में और हमारे पोल। तो अगर हम इस हिसाब से इसको देखें प्रदीप जी, हाउ डू यू सी अभी देश के अंदर काफी गुस्सा है एंड पीपल आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड, वो तो दैट इज नॉट द गवर्नमेंट्स फॉल्ट, व्हाट पीपल आर एंग्री अबाउट इज द रिस्पॉन्स, मतलब किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुई है। बट क्या आपको लगता है कि व्हेन यू टॉक टू वोटर्स दैट वुड दिस इम्पैक्ट द वे दे लुक एट, maybe it's too very early to say this, but अभी 3 साल हैं जनरल इलेक्शन के, could this affect the BJP then, or is Mr. Modi's personality, that Teflon personality जिसकी हम बात करते हैं, that nothing really sticks against him, or did the Bengal election prove that he is not infallible, that he too can suffer a dent in his Teflon image? So मैं आपकी बात के क्वेश्चन का पहले जवाब दे दूं तो बंगाल इलेक्शन में the verdict was against BJP for sure, may not be as against the Modi, because मोदी की जब बात थी तो उन्होंने बंगाल में 18 सीटें उनको बंगाल से दी, and it is more in favor of Mamata Banerjee and TMC, less as against Modi. Definitely yes against BJP, there is not a single % doubt, but there are so many other reasons. You have to have a face. मैं सबको हमेशा बोलता हूँ, this is my theory, people hold you accountable. तो एक फेस होता है तो बड़ा आसान हो जाता है। एक पार्टी होती है तो आप बोलते हैं ना दीवारों पे सर कहाँ मारोगे,
तो वो एक बहुत बड़ा फर्क उसके अंदर। लेकिन जब वाजपेयी साहब हार गए थे 2004 के जनरल इलेक्शन में, which I covered, I remember, there was no face to oppose him. But people can also vote against a government. जब इंदिरा गांधी हार गई इमरजेंसी के बाद, there was no real face against her, but people were angry with her, so they voted her. Definitely, yes. What you're saying is correct, but that was not the case in Bengal particularly. 4 फेस और 5 फेस तो पहले ही हो चुके थे जबकि ये सारा कुछ शुरू हुआ। और बंगाल में अभी भी एज फार एज पेंडेमिक और उसका मिसमैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए पहले तो है नहीं मिसमैनेजमेंट, ऐसा नजर नहीं आता इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो बंगाल को पेंडेमिक और उसके मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट के चलते देखना ठीक नहीं होगा। You're saying it's more in terms of how the pandemic affected voters, perhaps? Yes, definitely yes. Unless देखिए वोट में 100 लोग होते हैं, 100 लोग की अपनी अपनी समस्या होती है, किसको किस हिसाब से उसने इम्पैक्ट किया, किसको नहीं किया। जैसे नोटबंदी की बात मैंने अपनी बुक में लिखी हुई है। नोटबंदी ज्यादा करके लोग ये मानते हैं कि बहुत खराब डिसीजन था, बट मैं पहले तो इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दैट्स माई जॉब। बट हमने लगातार सर्वे किया एंड 57% इन आवर सर्वे दैट टाइम सेड वेरी गुड डिसीजन, very good decision. And yeah, 57% and about 30% say bad decision. So 30% is also substantial number, but 57 is significant number. You're getting my point. So it's not एक चीज की कोई राय नहीं होती, सब जगह पे country is so diverse, so interesting, consistency to consistency, demography to demography, it differ. It all depends what are their needs and expectation from the government. Which is why I tell people that I think it's too early to say anything about the next generation. 3 years is a long time in politics. क्या बात करते हैं आप, 3 हफ्ते is a long time. But I also found another interesting chapter in your book, which was that crowds at rallies don't necessarily mean victories. Now, then explain to me, why do you think election rallies are still in this day and age, जब social media है, YouTube live हो सकता है, with all this technology that we have, why is the old-fashioned election rally still important for politicians to do on the ground? So, दो चीजें, again from people perspective and from leader perspective, आपको हमेशा दो लेंस रखने पड़ेंगे अपने साथ में इलेक्शन को समझने के लिए। People perspective, rally is nothing but 3F, fun, festival, fund. मैंने जैसे बताया कि 100 वोट में से 80 वोट पुअर के होते हैं, उनके लिए एक फेस्टिवल होना, एक पिकनिक होना, एक आउटिंग करना इज अ ड्रीम। यू नो, उनकी खुद की शादी भी होती है, फेस्टिवल भी होते हैं, तो वो इतना एंजॉय नहीं करते हैं कि आपको अच्छी खासी बस के अंदर वो लेके भी जाएंगे, खाना पीना पूरे समय आपको मिलते रहेगा बस के अंदर भी, उसके दौरान भी, तो अच्छा खासा पिकनिक हो गया, और उसके ऊपर से 500 रुपए पर वो मिलेंगे। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे में जब भी पॉलिटिकल रैली होती है, हमारे यहाँ हेल्प और सपोर्ट सिस्टम बोलता है हम कल नहीं आएंगे क्योंकि हमको तो रैली में जाना है। क्यों जाना है रैली में? क्योंकि वहाँ 500 रुपए और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो उनके लिए फन, फेस्टिवल, फंड, 3F। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को कम्युनिकेट करना है, अपनी चीज को ब्रॉडकास्ट करना है निधि। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए जैसे आपने बताया सोशल मीडिया और वो सब तो है, बट बड़ी चीज उसके अंदर क्या है कि अभी आप जैसे देख रहे थे कि स्टेडियम में कोई स्पेक्टेटर नहीं थे, बट मैच तो खेले जा रहे थे। वाई? बिकॉज उससे बड़ा टारगेट ऑडियंस तो घर में बैठ के टीवी के ऊपर देख रहा है। So it's the optics. तो इट्स द ऑप्टिक्स वन। सेकेंडली, जब आप लीडर हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको, जो मैंने जैसे कहा कि आउटलेट, जो आपके अपना कार्डर होता है उसको भी तो बूस्ट करना है, उससे भी तो कम्युनिकेट करना है, तो दे गेट बूस्टेड और उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, और वही वोटिंग के पोलिंग डे के दिन वोटर्स को घर से निकाल के वहां पर लाते हैं। तो इसमें मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। एक ही उनको ब्रॉडकास्ट करना है, वो आप खुद ही मीडिया में कवर करोगे, वो रैली करे ही ना, घर में बैठे, तो आप उसको मीडिया में क्या कवर करोगे? तो उनकी फ्री में एडवर्टाइजिंग हो रही है, आप ये समझिए उस चीज को। दूसरा, अपने कार्डर को उन्होंने वो करना है, तो इस वजह से वो रैली करते हैं। एंड दे नो फॉर श्योर कि रैली में आने वाले लोग डजंट मीन कि उसमें विक्ट्री है। उसके बड़े बड़े एग्जाम्पल आपके सामने, 2015 का बिहार का इलेक्शन, जिसमें कि बड़ी बड़ी रैली हो रही थी एनडीए की, बीजेपी की, बट कौन जीता? महागठबंधन जीता। 2020 बिहार में क्या हुआ? बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, तेजस्वी प्रसाद यादव की और नीतीश कुमार जी की रैली में कुछ 100 लोग होते थे और वो भी कुछ कुछ टमाटर या कुछ कुछ फेंकते थे। व्हाट इज द रिजल्ट? अपोजिट।
So this That is how. why Indian elections are so unpredictable and interesting. There's a question from Ashutosh Vanaparthi who's asking how the youth in India votes. I mean, aapke surveys mein, what are the general trends that you have found about the youth vote, and is it too early for us to dream that the youth don't care about caste and all these other issues? देखिए, कास्ट में बार बार कह रहा हूँ, आप उसको कास्ट को नेगेटिव मत लीजिए प्लीज। आप भी यदि आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा तो आप उसको ही वोट करेंगे, भले ही आपका किसी भी पार्टी का हो। तो लेट्स बी वेरी क्लियर एंड फेयर अबाउट इट कि भाई मेरी कास्ट का मेरे बीच का लोग है तो क्यों ना वोट करूं, मेरी कौन सी गलती है उसमें। अब वो पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उसमें तुम मेरे को थोड़ी आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो मेरे मैंडेट को। तो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। So आपका क्वेश्चन क्या था निधि? आई एम सॉरी। मेरा यूथ वोट, व्हाट ओके, asking is, मतलब कोई ट्रेंड्स, आर देयर एनी yes, ट्रेंड sure. emerging about what their concerns are? So 18 to 25 यदि आप उसको यूथ मानते हैं, हम उसको यूथ मानते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर 18 to 25 एज ग्रुप, उसका जो वोटिंग मशीन के अंदर जो परसेंटेज है वो 15% के आसपास है, 15 to 20% के अंदर वेरी करता है। तो अगेन यूथ की अपनी नीड्स, एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस होते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द लीडर, एंड दे डेफिनेटली केयर फॉर द टेक्नोलॉजी, of course the employment, and leader as in how he is performing, what is his agenda, what is his like. For example, मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा एग्जांपल, चंद्रा बाबू नायडू 2004 का इलेक्शन, जब आपने इंडिया शाइनिंग की बात करी, अटल बिहारी गवर्नमेंट, उसी समय की मैं भी बात कर रहा हूँ। 2004 चंद्रा बाबू नायडू वो भी इलेक्शन में गए, he was having the incumbent government at that time। तो हैदराबाद के अंदर जो टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, वो पूरा का पूरा श्रेय चंद्रा बाबू नायडू को, एंड ही हिमसेल्फ इज अ टेक्नोक्रेट, राइट, इंजीनियर है वो। रिजल्ट क्या हुआ? बड़ी बुरी तरह से हारे। तो अब आप उसको ये देख लीजिए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि 2 बार वाईएसआर ने उनको वापस नहीं आने दिया, तब तक वो थे 2004 में भी और 2009 में भी, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर जनरल इलेक्शन के साथ। तो अब आप यूथ दो तरह का, एक है जो शहर का यूथ है, उसकी जरूरत है, अलग है। जैसे शहर की बात करें, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो आप केयर करेंगे गार्डन के लिए, ट्रैफिक के लिए, इन सारी चीजों के विषय में आप केयर करेंगे। लेकिन वही यूथ यदि गांव में है तो उसके लिए पहले रोड की कंडीशन क्या है, उसको शहर में आना जाना, लाइट पूरे समय आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर की गांव के अंदर, उससे भी तो यूथ इम्पैक्ट होता है। एंड उससे भी बड़ी चीज, कॉलेज और स्कूल है कि नहीं वहां पर। तो ये 2 अपसाइड डाउन हो जाता है। तो आप जब भी यूथ की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसको रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया पहले देखना है। आपके दर्शकों के लिए फिर से मैं बता दूं, मैं हमेशा बताते रहता हूं, बहुत बार हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं रूरल और अर्बन की डेफिनेशन में। रूरल तो चलो सब समझते हैं कि ग्रामीण है, सबके लिए मैं बता दूं, देयर आर 600,000, 6 लाख प्लस विलेजेस है कंट्री के अंदर, जो कि 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो 30% अर्बन है वो दिल्ली, बॉम्बे मेट्रोज में नहीं है, वो 25 प्रदेश की राजधानी और बड़ी बड़ी सिटी में नहीं है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, नो ये नहीं है, 100 सिटी नहीं है, ये 6000 सिटीज एंड टाउन्स हैं जिनको कि आप अर्बन कहते हैं। अर्बन रूरल की डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, वेयर द गवर्नेंस इज ड्रिवन बाय municipal party, nagar palika and nagar nigam corporation, which is classified as urban, and where government is gram panchayat and nagar panchayat, which is classified as rural, and their livelihood is directly and indirectly depend on agriculture. So ये पहले आप जान लीजिए. You have to understand the background. In fact, related to this is Ramu Kola from Geetam University has asked that, you know, after elections, what happens to all the promises that are made by political parties during the election? Is there any process to monitor this? If not, should there be a process to monitor this? सुनते तो हम बहुत कुछ है, मैनिफेस्टो पढ़ता है कोई? मैनिफेस्टो डेफिनेटली कोई नहीं पढ़ता, बट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। पहले जमाने में तो ऐसा होता था, वो बोलते थे 5 साल तक तो दर्शन ही नहीं हुए नेता के, जो अगली 5 साल के बाद ही आते हैं। बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, आज आप हर रोज देख पाते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आपके नेता ने जो प्रॉमिस किया था, या प्रॉमिस चलो मैनिफेस्टो में ना भी किया हो,
बट वो पूरा का पूरा एक एक हिसाब उसका लिख के रखते हैं। आपको याद होगा यशवंत सिन्हा जी का एक फेमस कोट है कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी सरकार में, और उसके बाद जब इलेक्शन के लिए गए हजारीबाग के अंदर, तो उनको एक महिला ने पूछा, बाबू आप केरोसिन का भाव बढ़ा दिए। तो महिला को सिर्फ ये पता है, ये इनको मैंने पिछली बार जिताया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्हीं के रहते केरोसिन का भाव बढ़ गया। तो यशवंत सिन्हा जी ने कहा, आई फील कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और जिसकी वजह से मैं चुनाव हारा। तो वो बिल्कुल बराबर लिख के रखते हैं। मैं बोलता हूँ लीडर और वोटर के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, अनडिक्लेयर्ड एग्रीमेंट, कि आप बहुत सारे वादे करते हैं और जो वोटर होता है उसको एंडोर्स करता है थ्रू देयर वोट, और वो आप भूल जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल याद रखता है। नवीन पटनायक को बिल्कुल याद रख रहे हैं वो सब। In fact, Ramu Kola is here on the panel with us. Ramuji, are you satisfied with that answer, or do you think people need to put more pressure on our leaders to hold them accountable? I mean, I personally think we need to hold our leaders far more accountable, say for health infrastructure, which right now is affecting all of us. Ramuji. Yeah, yes, correct, ma'am, and good evening to all. I believe that we should be continually communicated by the politician and the rural government, because see, technology is improved nowadays, but even though we all go through and depend on the media and all, so that should come in the media, so that every people should watch and can judge the work done by the current government. I agree. In fact, I think the media often takes its eye off the ball as well. The media doesn't follow through on doesn't really cover these issues. Media ke liye kya hai? It's a sensational thing here and there which becomes a headline, and you're not looking at schemes in greater detail. I think Pradeep ji would agree with that. So definitely yes, 100% yes. I would say मीडिया डेफिनेटली, मीडिया का ये रोल है कि लोग नेता क्या कह रहे हैं उसको रिपोर्ट करना, बट माय रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ रामू जी इज दैट कि मीडिया को ये भी रिपोर्ट करना चाहिए व्हाट नेताज आर डूइंग. सो सेइंग इज वन थिंग, डूइंग इज अनदर. report card, saying and doing. If you identify and focus the light onto this what they are doing, I'm sure they will be more accountable. Well, we are almost nearing the end of the session, so let me ask you, aapne kaha tha at the beginning to ask as many uncomfortable questions as possible. So far I hope zyada uncomfortable nahi tha, but let me ask you what the political buzz is, which is that Access has also been doing internal polls for the BJP and giving them advice on how they're doing in, like, let's say just concluded in Bengal and other states as well. Is that true? Do you do polls for other political parties as well? How does this work? So definitely yes, we do work for all political party. I don't remember which party we haven't worked for, and that's our job. Our job is like a lab technician. We call it social laboratory. Ki aap, like any laboratory, your body, we say this is the state, any state, and what is our role? कि आप MRI मशीन के जैसा एक स्कैनर चलाते हैं और पता करते हैं आपकी बॉडी में, आपके नी में कुछ और प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन में कुछ और प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है. आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट वेयर and put it forward to the right stakeholder. And sometimes this right stakeholder is political party or government or corporates. And if they also acknowledge this, yes, there is a problem, and if they work for a solution to remedify that problem, I am sure everybody will be winner. We will be the winner, so as the people will be the winner, so as the political party or corporate, whoever is the decision maker, will be the winner. So we definitely work for political parties, and we cannot afford to be biased for sure, otherwise we will be thrown out of the business for sure. And that is the reason why we never do opinion poll. That's the reason why we always do exit poll. It's not ethical on our part. We are working for ABCD political party, and we report and we try and influence the voter through opinion poll. So that's our job. We are doing our job, and our job is to run the scanner throughout. That's what we are doing. So let me ask you the last question. This is from Anjali Sriram. It's an interesting question, which is that how does the Nota factor affect your exit polls? How do you interpret that data, and does it hold any significance when you look at your polls? So
In fact, Anjali is there. Anjali, sorry, please, I didn't see that you're on the panel. Go ahead. Yeah, ma'am, I think you asked my question. So Sorry. Yeah, no, it's okay. So how does the how do the Nota voters, like, do they hold any significance, and how do you interpret them when you do your exit polls? Anjali, very good question and very pertinent question. Nota, in fact, in my previous book, Economic Miracle, I have written about this Nota. And बोलते हैं ना कि उसको toothless बना दिया है. Some political parties ने उसको toothless बना दिया. Nota का meaning था none of above, right? You are rejecting all the candidate who is contesting and you are putting in Nota. You are pressing the Nota button. But problem is that कि for example, just I'm giving you the example. For example, 100 vote cast हुए, and if the Nota got, let's say, 32% vote, and all the candidate got less than 32% vote, then Nota is the clear-cut winner. That's the very purpose of bringing the Nota. But it got there, even if 32%, the Niyam Kanun is that even if Nota got 32%, which is the highest, the second highest will be declared the winner. Then Nota got its relevance completely lost, So that is the reason why 1 से 2% maximum, 2 तो कभी नहीं हो पाते, 1%, 1.5%, 1.25% सारी कंसिस्टेंसी में रहते हैं. I don't think कि उससे उतना बड़ा फर्क पड़ता है. बट नोटा को मैंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, इसको यदि वाकई में इस्तेमाल करना है तो आप जितने भी कैंडिडेट्स को वोटर्स ने रिजेक्ट किया है, आपका कानून कहना चाहिए कि दे शुड नेवर बी कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन. देन यू सी नोटा विल बी द गेम चेंजर. बट वो हो नहीं रहा. Well, that is an interesting thought to end on. Pradeep Gupta ji, thank you so much for joining us at Kautilya today. It was fascinating to talk to you, to get some insights on how voters in India vote. And just to tell everyone once again that we have a 31st May deadline for those who want to apply to our master's program in public policy, which begins in just a couple of months in July. So there are just a few places left. If you want to apply for that 2 years master's degree, this is the time to apply. And it's a terrific faculty, a terrific program. It's on our website, kautilya.org.in. You can have a look at that. Pradeep Gupta ji, we look forward to your next exit poll, which is the big one in UP, although there are other important elections at that time as well. But I know your team is already working on the ground. So we look forward to whatever data and insights they have to provide to us. Thank you very much for joining us.